There was a Bombay movie in 1964, a few weeks before Nehru's death. It was called Leader, the only film for which the late actor Dilip Kumar wrote the story. Legend has it that he ghost-wrote stories for some of his other movies, but this was the one he took credit for. He was a politically active filmmaker who greatly admired India's first Prime Minister, as Nehru did him. The way India's democracy is being hollowed out by a venal plutocracy, the story of the leader becomes prescient. Truly fortuitous that Dilip Kumar could see the denouement quite vividly 6 decades ago. Take a particularly relevant scene. Dewan Mahendranath, played by late character actor Jayant, is holding a secret meeting where Mr. Guduk is being set up by a business cabal to be their candidate against a Nehruvian leader called Acharyaji. Jayant's lines nicely describe the seeding of plutocracy in India. Agreed that Acharya is a very great leader. He has the complete support of the people, but, and a big but, he doesn't have the power of money. And money is God, Mr. Guduk. Today, everybody worships money, not idealism. Guduk moans that it would still be impossible for him to defeat Acharyaji, and to win the election. We are not planning to win the election, Mr. Guduk, Jayant interrupts. We have to buy the election with our money. We'll spend whatever it takes to buy the votes. And the corpse of socialism that Mr. Acharya propagates will be carried on your shoulders, Mr. Guduk. Politics has become a lucrative business, Mr. Guduk. Billions of rupees are at stake. Factories and mills our forebears left us, the government is imposing tax, super tax, and countless penalties on them. Commissions are investigating our government tenders. Our trade licenses are threatened with cancellation at the slightest excuse. Since Acharya is involved in this, we'll have to cut that hand. Where do we stand in the corporate management of India's democracy that increasingly serves the interests of private profit? Another tycoon growls, we have to keep the government on a very short leash. Dewan Mahendranath was handed a windfall with India's free market reforms. The result is out in the open. 6 decades on, Gujarat Chief Minister Narendra Modi would become Prime Minister in 2014, riding his campaign for a Hindu temple on the rubble of a mosque he worked to destroy in Ayodhya. A cabal of business heads then called a meeting to anoint him their candidate in the 2014 polls. The outcome was a brew of corporate muscle power and a party using its mega coffers to ply and project religiously driven street power. Mr. Modi arrived to take the oath of office in the private plane of one of his key backers, the business tycoon Gautam Adani. Their friendship would be called into question with the Adani affair breaking out. There were other fallouts from money power. 3 major states the BJP rules today and several smaller ones where it has taken the support from opposition ranks bear the stamp of corporate hold on politics. Opposition governments in Madhya Pradesh, Maharashtra and Karnataka were toppled by defections. It was evident that the BJP, which rules these states, alone or with allies, did not win them clearly, a blessing in disguise for opponents. Karnataka is to test the perfidy in assembly polls on May 10th. So where do we stand in the corporate management of India's democracy that increasingly serves the interests of private profit? According to a former associate who Mr. Modi made governor of Jammu and Kashmir, the Prime Minister is perpetually self-absorbed and seems unbothered by the daily problems of the Republic. The phrase Satya Pal Malik used in his bold interview with Karan Thapar was Modiji mast hain apni main, to hell with it. He has little or no real knowledge of the raging issues in Jammu and Kashmir. Informed about a security blunder that led to a terror attack, killing dozens of paramilitary men, his response was to keep the matter quiet. He used the massacre to woo young voters for his 2019 election campaign. Mr. Modi has no particular dislike for corruption either, Mr. Malik said. In any functioning democracy, the government would be on the mat on many or any of the charges Mr. Malik leveled at the Prime Minister, on his government and his key aides who he named in what would have been a game-changing interview in another country. There was a time in Indian democracy when a routine train accident would prompt the railway minister to take moral responsibility and quit.
One of Nehru's finance ministers was made to resign over charges of favoritism in a business decision, leveled by the Prime Minister's own son-in-law. Those were indeed halcyon days of India's unexpectedly vibrant democracy. The former governor of Jammu and Kashmir has thus publicly accused the Modi government of corruption and incompetence in running the security of the sensitive region. The massacre of 40 paramilitary men could have been avoided had the government not refused to provide the aircraft that were requisitioned to ferry the forces. Neither the government nor the gaggle of fawning journalists seemed interested in even touching the interview. This is not surprising. Consider the shrieking silence of the government over the alleged manipulation of his company's share prices by Gautam Adani, a friend of Mr. Modi. It was in his private plane that Mr. Modi arrived in Delhi to take the oath of office in 2014. Not a squeak from the Prime Minister, not from the media on the international scandal. Worse, Sharad Pawar, a senior opposition leader, hitherto regarded as the pivot to opposition unity for 2024 elections, took a stand to praise Adani and oppose a parliamentary probe. Dilip Kumar had a line for him too. Kalhadi main lakti ka dasta na hoda / to lakti ko katni ka rasta na hoda. But for the wooden handle in the axe, there would be no way for the axe to harm the trees. The writer is Dawn's correspondent in Delhi. Published in Dawn, April 25, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. नेहरू की मौत से चंद हफ्ते पहले 1966 में बॉम्बे की एक फिल्म बनी थी। इसका नाम लीडर था। वो वाहिद फिल्म थी जिसकी कहानी मरहूम अदाकार दिलीप कुमार ने लिखी थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कुछ दूसरी फिल्मों के लिए भूत कहानियां लिखी, लेकिन इसी का सेहरा उन्होंने लिया। वो एक सियासी तौर पर फाल फिल्मसाज थे जिन्होंने हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम की बहुत तारीफ की, जैसा कि नेहरू ने किया था। जिस तरह हिंदुस्तान की जमहूरियत को एक मुतलक अलनान आमिरियत के जरिए खोखला किया जा रहा है, इससे लीडर की कहानी वाज़ेह हो जाती है। वाकई खुशकिस्मती से दिलीप कुमार ने 6 दहाइयां पहले ये मंजर बहुत वाज़ेह तौर पर देखा था। एक खास तौर पर मुतालिका मंजर लें। दीवान महींद्रनाथ, मरहूम किरदार अदाकार जयंत, एक खुफिया मीटिंग कर रहे हैं जहां मिस्टर घाटक को एक कारोबारी गिरोह आचार्य जी नामी नेहरूवादी रहनुमा के खिलाफ अपना उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार कर रहा है। जयंत की सतरें हिंदुस्तान में प्लूटोक्रेसी के बीज को अच्छी तरह बयान करती हैं। उन्होंने कहा कि इस बात से इत्तेफाक है कि आचार्य बहुत अजीम लीडर हैं। उन्हें आवाम की मुकम्मल हिमायत हासिल है, लेकिन, और एक बड़ा लेकिन, उनके पास पैसे की ताकत नहीं है। और पैसा खुदा है, मिस्टर घाटक। आज हर कोई पैसे की पूजा करता है, न कि आइडियलिज्म की। घाटक का कहना है कि आचार्य जी को शिकस्त देना और इलेक्शन जीतना उनके लिए अब भी नामुमकिन है। हम इलेक्शन जीतने की मंसूबाबंदी नहीं कर रहे हैं, मिस्टर घाटक, जयंत कहते हैं। हमें अपने पैसे से इलेक्शन खरीदना है। वोट खरीदने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम खर्च करेंगे। और मिस्टर आचार्य जिस सोशलिज्म का प्रचार करते हैं, इसे आपके कंधों पर उठाया जाएगा, मिस्टर घाटक। सियासत एक मुनाफा बख्श कारोबार बन गया है, मिस्टर घाटक। अरबों रुपए दांव पर लगे हुए हैं। फैक्ट्रियां और मिलें हमारे पेशों हमें छोड़कर चले गए। हुकूमत उन पर टैक्स, सपर टैक्स और लातादाद जुर्माने आयद कर रही है। कमीशन हमारे सरकारी टेंडरों की जांच कर रहे हैं। हमारे तिजारती लाइसेंस को मामूली बहाने से मनसूख करने की धमकी दी जाती है। चूंकि आचार्य इसमें मुलव्वस हैं, इसलिए हमें वो हाथ काटना पड़ेगा। हिंदुस्तान की जमहूरियत के कारपोरेट इंतजाम में हम कहाँ खड़े हैं, जो तेजी से निजी मुनाफा के मुफादात को पूरा करता है। एक और टाइकून चीखते हुए कहते हैं, हमें हुकूमत को बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए रखना है। दीवान महींद्रनाथ को हिंदुस्तान की फ्री मार्केट इस्लाहात से बहुत फायदा हुआ। नतीजा खुलकर सामने आ गया है। 6 दहाइयों के बाद गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी 2014 में वजीर आजम बनेंगे, जो अयोध्या में एक मस्जिद के मलबे पर एक हिंदू मंदिर के लिए अपनी मुहिम पर सवार थे।
इसके बाद कारोबारी सरबराहों के एक ग्रुप ने के इंतखाबात में उन्हें अपना उम्मीदवार नामजद करने के लिए एक इजलास तलब किया। इसका नतीजा ये निकला कि कारपोरेट ताकत में इजाफा हुआ और एक पार्टी अपने बड़े खजाने को इस्तेमाल करते हुए मजहबी बुनियादों पर चलने वाली स्ट्रीट पावर को आगे बढ़ाने और पेश करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मिस्टर मोदी अपने एक अहम हामी बिजनेस टाइकून गौतम एडनी के निजी तैयारे में ओहदे का हल्फ लेने पहुंचे। एडनी का मामला खिलने के साथ ही उनकी दोस्ती पर सवालिया निशान लग जाएगा। पैसे की ताकत के दीगर नताइज भी थे। आज 3 बड़ी रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है और कई छोटी रियासतें जहां उसने हिज़्ब इख्तिलाफ की सफ़ों की हिमायत हासिल की है, सियासत पर कारपोरेट गिरफ्त की महर सब्त करती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हिज़्ब इख्तिलाफ की हुकूमतों को पार्टी छोड़ने से गिरा दिया गया। ये वाज़ेह था कि बीजेपी, जो अकेले इत्तेहादियों के साथ मिलकर उन रियासतों पर हुकूमत कर रही है, वाज़ेह तौर पर उन्हें जीत नहीं पाई, जो मुखालिफिन के लिए एक नेमत है। कर्नाटक में मई को होने वाले असेंबली इंतखाबात में गलती का इम्तिहान लिया जाना है। तो हम हिंदुस्तान की जमहूरियत के कारपोरेट इंतजाम में कहाँ खड़े हैं, जो तेजी से निजी मुनाफा के मुफादात को पूरा करता है। नरेंद्र मोदी को जम्मू और कश्मीर का गवर्नर बनाने वाले एक साबिक साथी के मुताबिक वजीर आजम हमेशा खुद साख्ता रहते हैं और जमहूरिया के रोजमर्रा के मसाइल से बेपरवाह नजर आते हैं। सत्यपाल मलिक ने किरण थापर के साथ अपने बोल्ड इंटरव्यू में जो जुमला इस्तेमाल किया था वो था, मोदी जी मस्त हैं अपने में, इसके साथ जहन्नम में। उन्हें जम्मू और कश्मीर के बढ़ते हुए मसाइल के बारे में बहुत कम कोई हकीकी जानकारी नहीं है। सिक्योरिटी की एक गलती के बारे में जानकारी जिसकी वजह से दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसमें नीम फौजी दस्तों के दर्जनों जवान मारे गए, उनका जवाब मामले को खामोश रखना था। उन्होंने इस कत्ल-आम को अपनी 2019 की इंतखाबी मुहिम के लिए नौजवान वोटरों को राग़िब करने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मिस्टर मोदी को बदउनवानी से भी कोई खास नापसंदीदगी नहीं है। किसी भी काम करने वाली जमहूरियत में मुल्क ने वजीर आज़म, उनकी हुकूमत और उनके अहम साथियों पर जो इल्ज़ामात आयद किए थे, इनमें से किसी एक पर हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया जाता। हिंदुस्तानी जमहूरियत में एक वक्त था जब एक मामूल का ट्रेन हादसा वजीर रेलवे को इखलाकी जिम्मेदारी लेने और ओहदा छोड़ने पर मजबूर करता था। नेहरू के वजीर खजाना में से एक को वजीर आजम के अपने दामाद की जानिब से लगाए गए कारोबारी फैसले में जानिबदारी के इल्जामात पर इस्तीफा देना पड़ा था। ये वाकई हिंदुस्तान की गैर मुतवक्के तौर पर मुतहर्रिक जमहूरियत के यादगार दिन थे। इस तरह जम्मू और कश्मीर के साबिक गवर्नर ने खुलेआम मोदी हुकूमत पर हसास खिते की सलामती को चलाने में बदउनवानी और नाअहली का इल्जाम लगाया है। 40 नीम फौजी जवानों के कत्ल-आम से बचा जा सकता था अगर हुकूमत ने उन तैयारों को फराहम करने से इनकार न किया होता जो फोर्सेस को ले जाने के लिए तलब किए गए थे। न तो हुकूमत और न ही सहाफियों को इंटरव्यू को छूने में कोई दिलचस्पी दिखाई दी। ये ताज्जुब की बात नहीं है। मोदी के दोस्त गौतम एडनी की जानिब से उनकी कंपनी के हिस्सों की कीमतों में मुबैना हीरा फेरी पर हुकूमत की खामोशी पर गौर करें। मोदी 2014 में अपने निजी तैयारे में हल्फ उठाने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। वजीर आजम की जानिब से न ही बैन अल-अक़वामी स्कैंडल पर मीडिया की जानिब से कोई आवाज उठाई गई। इससे भी बदतर बात यह है कि सीनियर अपोजिशन लीडर शरद पवार, जिन्हें अब तक 2024 के इंतखाबात में अपोजिशन इत्तेहाद का महवर समझा जाता था, ने एडनी की तारीफ की और पार्लियामानी जांच की मुखालफत की। दिलीप कुमार के पास भी उनके लिए एक लाइन थी, कलहादी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। लेकिन कुल्हाड़ी में लकड़ी के हैंडल के लिए कुल्हाड़ी के पास दरख्तों को नुकसान पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं होगा। मजमून निगार दिल्ली मैदान के नामा निगार हैं। अखज़ शुदा बतारीख 25 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.